studio because he predicted so. I'm Gitanjali Soni and my friend is. मैं हूं आदेश कुमार गुप्त और कदन के साथ साथ चर्चा के लिए मौजूद है हमारे एक और क्रिकेट एक्सपर्ट वेंकट सुंदरम, फॉर्मर क्रिकेटर। और यहाँ पर हमारे कार्यक्रम का नाम है फ्री हिट 2020। लेकिन सुंदरम साहब, क्या आपको लगता है कि आज तो वाकई विराट कोहली ने जो विराट रूप दिखाया, और उसके अलावा केएल राहुल भी देर से आए पर दुरुस्त आए, तो इन्होंने वाकई फ्री हिट अंदाज में बैटिंग की। बहुत अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल। कोहली ऑफ कोर्स वाज आउटस्टैंडिंग और ही ऑलवेज बैट्स फ्रीली एंड ही वाज मिडलिंग द बॉल। शुरू में ही वाज लिटिल शेकी, got a couple of edges but it didn't go to hand. But Rahul was a very fine innings. He played confidently. He played like the Rahul we know, if I may say. He got a good 50. He could have carried on and maybe got 100. Right. But just after his 50, he played across the line and got out, which is sad because when a batsman strikes form after such a spate of low scores, you expect him to carry on. And just when he looked capable of doing that, he got out. But then Surya came in and played like Surya does these days. And which is aggressive, very, very positive. And I think overall, India has got a good score, 184. If put it this way, if Bangladesh chase this and get it, then they deserve it. Oh, yes. Then that is going to be really, really, I think, awesome kind of, effort from Bangladesh it would take. But otherwise, it seems very, very remote. Kannan is making face, I don't know for what reason, because this particular thing that Bangladesh could do doesn't really go down well, right? I don't think that after you put on 184 runs on the board, you're supposed to lose a match, number one. My second point is the whole tournament we've seen how Kohli has blossomed again. 3 half centuries, and the way he batted today was gay abandon. KL Rahul obviously had to save his skin, so he scored. But the beauty has been, Bangladesh won the toss, and the decision was not proper. I feel the big defining moment was to soak in the pressure and bat freely. And there's Sun God has been really kind. And last line on Virat Kohli, he becomes the highest in World Cup in T20. And Sachin holds the record in ODI. So I think these stats, it's a delightful day for Indian cricket fans. वाकई सचिन और विराट के तो कहने क्या। वेंकट जी, आपको लगता है कि यहाँ जिस तरह से गेंदबाजी रही बांग्लादेश की, कुछ समझ में नहीं आ रहा था गेंदबाजों को किस लेंथ से गेंद करें, और इसके अलावा फील्डिंग का स्टैंडर्ड भी आज उनका बहुत पुअर लगा। देखिए, ऐसा है कि जब बैट्समैन चल पड़े और उनके स्ट्रोक्स चल रहे हैं एग्रेसिव, 10-10 रन आ रहे हैं ओवर में, तो अच्छे फील्डिंग साइड क्रम्बल कर जाते हैं। और वो शुरुआत हुआ कि रोहित का कैच ड्रॉप हुआ, सिटर, और उसके बाद रोहित आउट भी हुए, और रोहित और हार्दिक पांड्या दोनों एक जैसे आउट हुए बैकवर्ड पॉइंट पे, सीधा हाथ में फील्डिंग प्रैक्टिस कराए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है। नाउ इट रिमेन्स टू बी सी हाउ आर बॉलर्स बोल, बिकॉज अब हर ओवर में जिसमें रन नहीं पड़ेंगे ना, तो ऑलरेडी 9 से ऊपर है आस्किंग रेट, 184 185 चाहिए उनको, तो इट इज़ ओवर 9 runs एंड ओवर दे नीड। तो एवरी ओवर दैट यू बॉल वेर यू डोंट कंसीड से 4 runs or 5 runs, the pressure will tell, with the asking rate will go to 10, 10.5 and things like that. कनन, जैसे हमने फर्स्ट शो में बात की थी कि सेकंड शो में बात करनी होगी अब हमारी बॉलिंग और फील्डिंग के बारे में। आज अश्विन से तो काफ़ी उम्मीदें रहेंगी, बिकॉज ऑब्वियसली एक वहाँ लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है, तो उस वजह से अश्विन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाले हैं, हम ये उम्मीद करते हैं। बट उसके बावजूद अगर आप देखें तो फील्डिंग स्टैंडर्ड हमने लास्ट मैच में देखा इंडिया का बहुत ही ज़्यादा एवरेज था, उस पर भी काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा इंडिया को। Definitely you have to bowl well, you have to field well, but the big difference between the two matches is you did not have the runs on the board, against South Africa. Difference here is you have runs on the board, point number 1. Point number 2 is we are talking about Ashwin in bowling, but I think Ashwin gave a big support in the end, otherwise you would have not got to 184. Exactly. Akshar came and Hardik also hung around. Rohit, of course, has been a flop show. But I think Ashwin, that 6, what was defining, last over, the kind of runs we got was very, very big. I think between Ashwin and Akshar, they are going to probably exploit the conditions. But we've got very, very good quality medium pacers. I think between Shami, Bhuvi's been bowling maximum number of dot balls. And don't forget, Hardik Pandya has again shown he's super fit to bowl in the T20 format. Exactly. जी हाँ, हार्दिक पांड्या तो कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें नहीं भूलना चाहिए कि अर्शदीप सिंह जो अपने शुरुआती स्पेल में काफ़ी किफ़ायती भी हैं और विकेट भी निकालते हैं। हाँ, नहीं, इसमें देखिए, यू गॉट 6 bowlers इस मैच में। एक बहुत बड़ी बात है कि आपके 6 रेगुलर bowlers हैं, which gives you a lot of options. If somebody is not bowling well, somebody is not getting his length,
then the other 5 can make up. Maybe and you bowl. just need 5. Yeah. So the captain has got options here, and I think our fielding would also be tested जी. because the side boundaries are short. You have to run, you have to field fast, you have to throw, and our keeping will also be tested here because you got spinners. The batsman will go for the runs, and keeper has to be alert. So it's going to be a bit of a test. But I think India, you've had one bad day in the field in the last match at Perth, but this is a new day, and you got 185 runs to defend. On board, yes. So I think the fielding will also be good. And that too, we will get to know about the fitness of Dinesh Karthik, as we were just thinking that how fit he would be. We'll very soon get to know. But bottom line is, we scored well, but still I guess the concern is, besides Virat, we can't really put finger on a player who could really be, we could trust on for a better maybe hitting, because this is T20 format. Hitting is required. Well, KL Rahul worked today, thank God. But right now, again, our opening pair is a concern. Rest remains to be seen how our bowlers would do, and the fielding has to be of the same standard, right? जी हाँ, बिल्कुल, आपने काफ़ी सारी बातें बताई और अब हमारे प्रोड्यूसर्स का इशारा है कि इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त किया जाए। जी। कन्नन और वेंकट काफ़ी बातें आपसे करना चाहते थे। मिठाई तो हम ऑलरेडी ला चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसका स्वाद कैसा रहेगा अगले कार्यक्रम में ज़रूर बताएंगे। Till then, we will फिलहाल say इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं goodbye. आदेश कुमार गुप्त और Gitanjali. कहते हैं आपसे नमस्कार। Goodbye. Free Hit 2020। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण चंद और वी के तोमर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।